let you know. You might be experiencing a lot of fall in terms of the correction happening from Friday and of course continuing today as well. Don't worry at all about it. Remain invested. And from with regards to the weekly rebalances on alpha and momentum, we would see since it is due tomorrow morning, we'll see if we need to retain more names if they still are sitting in terms of the right structures. Our monthly rebalances are due on 19th of Feb, which means next Monday, and therefore I would also ask you to wait for this week and only plan new investments in any of the monthly portfolios by the next Monday, because that time it would be the most recent research, and absolutely we will decide depending on how the markets go this week. Our models will kind of help us decide if we need to keep some part of the debt or cash, or and not really go full in, and maybe now the cap may start moving slightly towards more mid and large. So that's how it is. And if you have any questions, let me know. I just thought to go quick live on my mobile while on the way to a meeting. Anything else I can help you with? Please do book a meeting with me on calendly.com/Arya Robin. Uh, Okay, Kumar says, sir, I started investing last week. Whenever I invest, the market goes down. Well, market do not know, Kumar, that you invest, right? And therefore it should not have any impact on. And don't worry about it. I'm very sure this kind of sharp pullbacks, sharp correction to mean, and sometimes it is such a big move, which kind of destroy the structure on the higher frame. Don't worry about it. Since these stocks which you right now are invested in have gone through all the quality checks in terms of the names of the businesses, in terms of their valuations. So it's just also the Q3 results, right, which is right now on. And therefore, the PSUs, of course, had not a very great numbers in terms of the outcome on the results, and therefore markets are kind of treating them that way. But if you look at even today, IT is doing pretty okay. Couple of stocks which are in pharmaceutical space are doing pretty all right, which are and since, as I said, as the results are on today, and a lot of results are coming up, there is and there's a lot of market volatility. Uh, Okay, so Rakesh says, I think you have to keep some cash and debt to tackle future market volatility. Yes, Rakesh, don't worry about it. We will do absolutely if there is any weakness in the broader market structures. By the way, I'm not driving, just so that you know. I'm not driving. I have kept my car on the side. Yeah, in case there is any broad market weakness, and our model suggests that we need to move to slightly safer assets, we would. But such kind of 1 2 days. Weaknesses shouldn't be really a problem, because if you look at the portfolio, they're sitting at such a high number, which is anyhow not sustainable from a yearly perspective. Corrections are healthy, just that when you participate late in the cycle, you feel more impact, because you have just recently invested, where the people who have invested from quite a lot of time are still sitting at a lot of profits. So I'll say, answer said, can I average? No, please don't average. Wait for rebalances. Do not try to time the market. Do not put more money because market is falling. You never know if the fall continues for another day or so, which would mean that you will unnecessarily start trying to capture a falling knife, and also we might take that stock out of our kind of composition. And if you do try to apply that averaging logic, it doesn't never works in falling falling markets. So do not do that. uh, Souvik, are we heading towards a correction, or this sell-off is one-time event? So, Souvik, thing is, we of course, even all of us, not just the investors, but also from people who manage money and funds, right? We talk a lot about when market starts to show correction, and if you look at, if you look at the market cycles over the last maybe many years, 20 years or so, uh, we are such a bullish kind of big bull run from 2020 post COVID, which absolutely will continue to rise. Say in a we are calling it as a decadal bull run, uh, and
things cannot go upward, right? So it has to have the right level of correction and right level of kind of up and like a heartbeat, right? Things has to move like that, and it is healthy for the market. If things will sustain, and if it will go in one way, it will anyhow cannot sustain. So it's good that markets are correcting. Sometimes when you are a recent investor, you feel the pain of getting into the market and seeing a drop down of 5% on your own portfolio. But if you remain invested for 6 months, as an example, follow the rebalance on time, it should be all right. uh, Questions are okay. What about tomorrow rebalancing? क्या आप इस जो rebalance करेंगे? Arup, I think the rebalance would be limited this week. We will see. I mean, of course, after market closes, we will run our own model, and I believe, looking at what the markets are doing, the rebalance might be skipped. If there is one, maybe there could be one name change, but mostly looks like just the broader view I have is they might be skipped. But I'll confirm in the evening once the markets close and we see how they close. And we saw week are being to correction. Okay, okay. I'm just checking more. Alpha brand is okay. What is your take on market this week? So my take on market this week would be: do not try to average the market. Do not try to put in more money by thinking that I'll average it down. Things never work like that in a long way. You have to have that horizon of 6 months. Plan to invest whenever you want to, or have planned for it, say as part of your monthly rebalance or part of your weekly rebalance, or whenever you say get your salary and you want to put some money. Do not try to really look into the day of fall and then try to pump in more money. That doesn't help, because we wouldn't know that you have put in more money on a Monday, and we end up rebalancing it on a Tuesday morning, which doesn't really sync in what you would like to do. Okay, Sovik says okay. Thank you, Ansar. Thank you for your trust, and Sovik, thank you as well. No, don't worry about it. Nothing about me giving any positivity here. Simple fact is, equity markets में आपके पैसे बनेंगे over a long term, and I also do not of the opinion that long term is unknown long term. इंडिया का पॉजिटिव स्टोरी है. We all are in that actively working to kind of prevent your drawdowns when the market see sharp falls by moving money into safer bets, and also would create alpha for you when will create alpha for you when markets will of course outperform, and then we will absolutely outperform the market. That's how our model is. Thank you, Ansar, for your kind words. और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. बैलेंस बास्केट में एवरेज कर लूँ? नहीं विशाल, कुछ भी एवरेज मत करिए. आप अपनी तरफ से प्लीज़ एवरेज मत करिए मार्केट्स को. बैलेंस बास्केट 19 मॉर्निंग रीबैलेंस होगा. We will see balance basket is sitting at a very good profits from last 1 month of its rebalance. So, and if you look at it, balance basket में generally relatively lower volatility भी है compared to other portfolios. अभी आप कुछ भी एवरेज मत करिए. आप रीबैलेंस का वेट करिए और फिर आप अपना अमाउंट अपने प्लान के हिसाब से ऐड करिए. लुकिंग एट द मार्केट कुछ नहीं करिए. अभी रात चंदा नॉर्मल है भाई. वेंसडे पूरा पिक उल्टा हो जाएगा. Yeah, absolutely right, absolutely. अभिराज, I mean, मुझे बहुत सारे WhatsApp आ रहे थे. Of course, many new investors have trusted us with their money, and therefore they of course panic when they see stocks falling with a big number. So that's what I thought कि मैं कहीं जा रहा था. I thought मैं गाड़ी साइड में लगा के एक बार क्विकली बात कर लेता हूँ आप लोगों से. So कुछ भी चिंता की बात नहीं है. ऑल गुड है. कम से कम होराइजन कम से कम 6 महीने का रखिए. और अगर आपको फिर भी एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना भी है तो क्वार्टर में एक बार देख लिया करिए कि कैसा चल रहा है. व्हेन यू आर लॉन्चिंग गोल्फ यूट्यूब चैनल. ये सॉल्विंग थोड़ा डिले हो गया हमारा चैनल. हम लोग आजकल अपने जो हमारे 6 स्मॉल केसेस हैं, एंड हम लोग एक और स्मॉल केस लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, विच इज़ अ थीम बेस्ड स्मॉल केस. हम अभी इन पे वीडियोस बना रहे हैं ऑन ऑल ऑफ दिस 7 स्मॉल केस, सो दैट वी कैन कवर कि एक्चुअली में अल्फा स्मॉल केस हमारा क्या है, हम कैसे बैक टेस्ट करते हैं, कैसे स्क्रीन करते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्या है, फिलॉसफी क्या है,
क्यों वो रीबैलेंस जल्दी करते हैं कंपेयर टू आर बैलेंस बास्केट। एक बार वो वीडियोस बन जाएं, एक बार वो 7 वीडियोस रेडी हो, तब हम अपलोड करके एक ही दिन प्लान करके गोल्फी का यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे। देन यू विल ऑल्सो सी मोर ऑफ गोल्फी टीम मेंबर्स टॉकिंग अबाउट of course the products and in terms of how we do what we do. मेरा चैनल कंटिन्यू रहेगा, my personal YouTube channel will continue, but you will see more of me coming on Golfi channel as well, and my other team members also coming on Golfi channel to talk about weekly wrap up of market, to talk about any monetary policy, and then what does it mean for you, and in terms of demystifying those numbers, and that's the plan. Okay, go Savik. Any other और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, आई थिंक वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर काइंड ऑफ ट्यूनिंग इन ऑन दिस लाइव। आई होप, मैं हेडफोन लगाया था, आई होप आवाज़ आ रही, आवाज़ सही से आई होगी। एंड सिंस मैं रोड के साइड में आई वाज गेटिंग कंटिन्यूसली व्हाट्सएप पिंग्स on our company channel, so I thought so you're great, I would love to connect once. Absolutely, I will call you आरिज और मैं सॉरी, मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ तो थोड़ा सा दूर से दिख रहा है। प्लीज़ आप मेरा कैलेंडली बुक कर लीजिए, calendly.com/Arya Robin, वहाँ पे मेरा 1-to-1 मीटिंग के लिए। और अगर आपको वो याद ना रहे तो मैंने पिछले सैटरडे जो लाइव हुआ था उस पर अपना वो भी लिंक दिया हुआ था, meet.golfi.app, उस पर जाके आप स्लॉट्स देख सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स बुक इट एनी टाइम। सर, इंटरेस्ट रेट कब कट होंगे? आप क्या करोगे इंटरेस्ट रेट कट करने की न्यूज़ से? ऑफ कोर्स पहले प्लान था कि जैन से बात चली, फिर मार्च, फिर अब जून की बात हो रही थी। और अगर कट होंगे इंटरेस्ट रेट्स तो हमारा तो फ़ायदा ही होता है इक्विटी मार्केट्स का, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। मोर मनी आता है इंडियन मार्केट्स में FIIs का, सो देन यू हैव और आप मत सोचिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑफ कोर्स गोल बेस प्लानिंग करिए, गोल बेस इन्वेस्टिंग करिए, एंड अगर वेल्थ मैक्सिमाइजर एक गोल भी है, वेल्थ मैक्सिमाइज करने का एक गोल भी है in terms of direct equity investment, because index funds is a very good instrument to kind of say plan, do investing with your goals map. अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं टू जनरेट सम एडिशनल अल्फा, वो भी तभी जनरेट होता है जब आप थोड़ा सा लंबा मार्केट में रहते हैं। सर इंटरेस्ट ओके हो गया, आंसर इज सेंडिंग मी हार्ट, थैंक यू अंसार। अरूप इज सेइंग कुछ स्टॉक का रिजल्ट ख़राब आया, उसका क्या करें सर? अगर आपके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं तो आप ऑफ कोर्स हमारे साथ मीटिंग बुक करके वी कैन टॉक अबाउट इट, वी विल सी आपका पोर्टफोलियो क्या है, वी कैन रिव्यू द पोर्टफोलियो एंड सेंड यू अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम whatever is allowed within our remit of research analyst. एंड अगर हमारे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में है उनका रिजल्ट ख़राब आया है तो वी विल ऑफ कोर्स टेक वॉट एवर, सी रिजल्ट्स ना क्वार्टर टू क्वार्टर होते हैं, और रिजल्ट्स ड्रिवन भी कभी कभी मार्केट में उसका रिएक्शन होता है। सो रिजल्ट ख़राब आना इज़ नॉट रियली अ साइन ऑफ कि वो स्टॉक, मतलब रिजल्ट्स ख़राब आना इज़ अ वेरी टेम्पररी इवेंट। वो रिजल्ट जब कंटिन्यूसली ख़राब आते हैं तब वी हैव टू रियली टेक अ डिसीजन। GMDCL सर, लास्ट क्वेश्चन। देखो, मैं किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का रिकमेंडेशन या उस पे बारे में डिस्कस करना मेरे उसके बाहर है, नॉट अलाउड बाय सेबी। जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड हमारे अगर पोर्टफोलियो में है भी, मान के चलते हैं, तो आप उसके पीछे हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है कि why we picked what we picked, you can of course access it via the official channel. आप स्मॉल केस एट गोल्फी पे बात करिए, मतलब उस पर ईमेल भेजिए, और जो भी वो भी आपको रिपोर्ट आती है अपना, जब आपका स्मॉल केस कॉन्स्टिट्यूट होता है उसमें पूरा एक फैक्ट शीट बनती है। सो बट इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में पब्लिकली मैं किसी स्टॉक के बारे में नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए, अच्छा, आई थिंक अंसार इज़ ऑल्सो हैप्पी। चलिए, आई थिंक सब अच्छा रहा, एंड इट वाज गुड टू स्पीक टू यू ऑन दिस 15 minutes live. I'll disconnect the call now. How do I switch it off? Thanks, Robin. Bye, Abhiraj. Okay, thank you, Mr. Abhiraj. Happy to talk to you.